Everyone, so welcome to your own channel that is called as Mathematics by Rumina, and in today's class we're going to discuss about 29 January JEE Mains Shift 1 paper, that what all has been come for your mathematics. If I talk about the particular subject, yes, 27 से पेपर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था. इवन द पेपर वॉज लेंथी ऑल्सो, बट डोंट वरी, द पेपर विल बी एनालाइज. होल द जितनी भी डेट्स है सब डेट्स को ढंग से एनालाइज किया जाएगा पेपर्स को, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी रैंक निकाली जाएगी. सो डोंट वरी अबाउट इट. सॉरी. जिसका भी पेपर बहुत अच्छा हुआ है, आई विल रिक्वेस्ट प्लीज़ गो फॉर योर जेई एडवांस. और जिसका पेपर थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है, आई विल प्लीज़ से यू कि अप्रैल अटेंड की तैयारी शुरू कर दो. अप्रैल में दोबारा आपका जेई मेंस होने वाला है. प्रिपेयर फॉर दैट. ओके. नाउ येस, एजुकेशन क्या है हमारा? एजुकेशन कुछ भी नहीं है, जस्ट एक पासपोर्ट है फॉर द फ्यूचर, सो दैट यू कैन जस्ट लिव योर गुड लाइफ बाय सिक्योरिंग गुड रैंक एंड यू कैन गेट एडमिशन इन योर IITs. Now let's start with the first question. Don't waste our time. In an AP, if A6 is equals to 2, product of A1, A4 and A5 is the greatest, find the common difference. So we simply have to find the common difference. So let G be equals to A1, A4 and A5. Let's write this all three in the terms of A6. मुझे पता है A5 क्या है. बेसिकली इट वुड बी A6 माइनस डी. A4 क्या होगा? A6 माइनस 2D. ऐसे ही A3 आ जाएगा A6 माइनस 3D. A4 आ जाएगा A6 माइनस 4D एंड A1 आ जाएगा A6 माइनस 5D. जस्ट मल्टीप्लाई इट. यहाँ से मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी एंड पुट द वैल्यू ऑफ A6 एज वेल, और फिर हम करेंगे इसका क्या डेरिवेटिव, सो दैट वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई इट. तो यहाँ से पहले मैं 2 कॉमन ले लूँगी. प्लीज़ जस्ट स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इट सो दैट यू कैन सिंपली जस्ट गेट योर वन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, और फिर हम उसका डेरिवेटिव इजीली कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू ऑब्टेन जी डैश एंड वी विल कीप इट इक्वल टू 0 सो दैट आई कैन ऑब्टेन माई वैल्यू ऑफ डी, बिकॉज मेरे पास एक ही वेरिएबल आ गया ना. सो इजीली जी डैश निकाल के इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड वी विल गेट द इक्वेशन. यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपनी वैल्यू लिख रही हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट मोर टाइम ऑन इट. So now a g dash, that is basically going to be equals to your 2 minus 5. Sorry, if I firstly talk about your g, so your g would be equals to this. So I can just say that your g would be 2 into minus 5d cube plus 17d square minus 16d plus 4. ये आया आपके पास आपका g, and g dash that would be 2 as it is, and यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? जस्ट डेरिवेटिव कर दो. माइनस 15d स्क्वायर प्लस 34d माइनस 16. नाउ बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग वी विल जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ d एंड कीप इट इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ. आई नो आप लोग कहोगे कि वाई मैम यू आर लुकिंग ऑन द शीट्स, बट आई एम जस्ट लुकिंग एट द कैलकुलेशन बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम ओवर देयर. So now from here I got the value of d as 2/3 and one value would be 8/5. So let's draw the graph like wavy curve basically. यहाँ पे आएगा 2/3 और यहाँ पे आएगा 8/5. What is 8/5? 8/5 is basically 1 point something and 2/3 is 0 point something. सो बीच में मेरे पास 1 आएगा. 1 पे एग्जामिन करते हैं कि मेरा जी डैश क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, प्लस होगा, माइनस आएगा. बेसिकली जब मेरे पास यहाँ पे 1 है इन बिटवीन, सो आई कैन सिंपली राइट 1. सो नेगेटिव, यहाँ पे 1 पुट करके पॉजिटिव, नेगेटिव, 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 पॉजिटिव. सो दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव. व्हाट दैट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है सिंपली दैट अगर मैं देखती हूँ तो मेरा ग्राफ पहले डिक्रीजिंग है और फिर यहाँ से सिंस यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, वेट लेट मी जस्ट ड्रॉ इट मोर प्रॉपरली. यस, सो मेरा ग्राफ यहाँ पे डिक्रीजिंग है, फिर यहाँ पे इंक्रीजिंग है और फिर यहाँ पे दोबारा डिक्रीजिंग है. सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम? ग्रेटेस्ट कब होगा? इस वाले पॉइंट पर होगा, दैट इज 8/5 पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा. एंड सो माई डी वुड बी 8/5 and we can easily ignore this value. I hope that the answer must be clear to all of you, and if it's clear please give me thumbs up in the comment box as well as the like button. Thank you so much everyone. Let's move towards the second question, and it says that integral sin x minus cos x sin square x sin x cos square x plus tan x sin cube x dx. Just convert this up with your sin x upon cos x. इतना करते ही believe me you will get your answer. So what I will get? I will get इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऊपर क्या आएगा? दैट वुड बी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, बिकॉज येस अपॉन में क्या था? कॉस एक्स था ना, तो मैंने डायरेक्टली उसको ऊपर ले लिया है.
आई नो मैं थोड़ा स्पीड में सॉल्व कर रही हूँ सो दैट आई कैन स्पीडली कवर all these questions and you can just start studying for your upcoming papers. और जो भी लोग यहाँ पे मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए. ये आ गया. लेट्स टेक योर साइन कॉमन एंड कट कर देते हैं बिकॉज साइन साइन एंड साइन ऐसे कैंसिल हो जाएगा मेरे पास. सो दैट वुड बी जस्ट 1 मिनट. ओके हम लोग एलसीएम भी लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा बेसिकली. ओके ना. Wait, yeah, so let me get started. So it was sin upon cos basically. So sin cube तो रहेगा ही रहेगा मेरे पास and यहाँ पे cos cube बन जाएगा after taking the LCM. Okay, so sin cancel. So मेरे पास यहाँ से क्या बचने वाला है. Over here I'm just going to be left with sin square x into cos x minus cos square x into sin x dx upon में what we have, upon में we have your cos क्यूब x प्लस साइन क्यूब x. इसे बस सब्सटीट्यूट कर देते हैं अपना सिंपली. सो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग आई कैन से दैट लेट सॉरी द इंक इज रॉन्ग. या सो लेट cos की पावर 3x प्लस साइन की पावर 3x बी इक्वल्स टू t. उठा के इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उठा के इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. सो दैट वुड बी 3 cos स्क्वायर x इंटू साइन x. मेरे पास ये आ गया. cos का डेरिवेटिव वुड बी माइनस साइन x प्लस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x dx इज इक्वल्स टू dt. यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं दैट दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट दैट वी हैव. जस्ट 3 हमें कॉमन लेना पड़ेगा. सो एज वी नो साइन स्क्वायर x cos x इट इज़ ओवर हेयर, cos स्क्वायर x sin x इट इज़ ओवर हेयर. सो आई कैन जस्ट राइट इट वुड बी एज 1/3. मैंने कुछ भी नहीं किया, 3 कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया. इंटीग्रल ऑफ dt over t. So what would be this now? This would be 1/3 log of mod t. So that would be plus c. So that would be 1/3 and since यहाँ पे क्या plus है so obviously it's going to be positive. So I can just write log of cos cube x plus sin cube x plus c. And yes, that is going to be your answer for this question. I hope it is clear and the answer is wonderful. It was a simple question. I would say that okay, it was not something which belongs to JEE Mains. It belongs to your simple CBSE solution. It is not difficult, that's why. So yes, this type of question you can even get into your CBSE papers. So now the next question exactly the same. This is also your CBSE question. It was not at all your I would say JEE Mains paper. Consider relation a comma b r c comma d where ad minus bc is divisible by 5. The function क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये बताना है मुझे. और नॉट, सॉरी द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. जिस बच्चे ने मुझे भेजा होगा मैंने जस्ट वहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लिया विदाउट सॉल्विंग इट. या सो सबसे पहले व्हाट वी हैव रिफ्लेक्सिव. तो पहले रिफ्लेक्सिव पे चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है. सो फॉर रिफ्लेक्सिव आई नो इट वुड बी a comma b relation with a comma b. So that would be अब a comma b divided by r divided by 5 है या नहीं है, मुझे ये बताना है. मुझे पता है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंपली बनने वाला है ab माइनस ए बी दैट इज 0. तो क्या 0 डिवाइड होगा 5 से? यस, 0 would be divisible by 5. Now similarly we have symmetric. So for symmetric what we have, that is a comma b relation with c comma d and c comma d relation with a comma b. आपको पता है जब ये आपका डिविजिबल होगा 5 से, सो ऑब्वियसली ये भी क्या है, ये भी आपका डिविजिबल होगा 5 से. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेटिस्फाइड बाय योर सिमेट्रिक. बट व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? For transitive, the function is going to be not true. Why? Since you know that, let's take directly an example. When I say 1,7 relation with 5,5, obviously यहाँ पे क्या बनेगा, 5 minus your 12, sorry 5 minus 35. So that is going to be minus 30. Yes, minus 30 क्या है, divisible है 5 से. Similarly 5,5 relation with your 3,2. तो यहाँ पे क्या है, ये भी आपका डिविजिबल बनेगा 5 से. यू कैन जस्ट चेक इजीली. बट इफ आई टॉक अबाउट 1,7 रिलेशन विथ 3,2, सो दैट वुड बी 2 minus 21, that is 19. 19 is not divisible by 5. So therefore
It is reflexive, it is symmetric, but not transitive, and that was your answer. And yes, it's belonged to CBSE, it's belonged from your book NCRT. It was not at all difficult question, it was a very simple question to be solved, and I hope that this much would be very much clear to all. Yes. Now this kind of question, I would not say that it was difficult, but हाँ आपको approach पता होनी चाहिए थी. It was one of the, I would say, easy question only, which can be easily done in your, I would say, 30 seconds. Let's take, if determinant of 2a cube is equals to 2 की power 21 and a is equal to this matrix, and then it is basically asking that what is alpha, where alpha comma beta belongs to I and alpha is greater than your beta. So let's start and solve it. Firstly, I can just write, ये मेरा determinant के अंदर है. When I'm going to take it out of the determinant, it would be 2 की power 3. Determinant of a की whole power 3 is equal to 2 की power 21. Try to solve it. So it would be 2 की power 9. Determinant of a is equal to 2 की power 21. So that would be determinant of a is equal to 2 की power 21 minus 9. That is 2 की power 12. We got till here. Okay, it's going to be 3 over here as well. We got this. Now, can I just write this as determinant of a is equals to, now it would be 2 की power 12 upon 3. So that would be 2 की power 4. Okay, we got this here. So that is basically equals to 16. Now solve the determinant of a, because we want the determinant of a value. So that would be your basically alpha square minus beta square. Now you just want some relation ताकि मेरा जो alpha square minus beta square हो किसके इक्वल आ जाए, 16 के इक्वल आ जाए. So for that you know one thing, that is 5 का क्यूब माइनस 3 का, सॉरी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 16, दैट इज 25 माइनस 9 दैट इज 16. सो व्हाट आई कैन से, अल्फा बड़ा है ऑब्वियसली बीटा से, सो अल्फा मेरे पास 5 होगा एंड बीटा वुड बी इक्वल्स टू योर 3. नाउ क्वेश्चन आपसे अल्फा बीटा पूछे, कुछ भी पूछे, यू सिंपली हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, सो यू कैन यस से कि आपका अल्फा क्या होगा 5 होगा. दैट्स इट. यस, इट कैन बी डन इन 30 seconds easily. Now moving ahead, a very simple question. I don't know how the questions are going to be very simple in the starting, but don't worry, the difficult questions are also there. Right now I'm just doing the simple questions again and again, I think, to boost your level. Yes, the simple questions are coming more. If dy by dx minus sine 2x upon 1 plus cos square x y is equal to sin x upon 1 plus cos square x and y0 is equal to 0, then we have to just find the value for this. ऑब्वियसली ये आपको बहुत डायरेक्टली दिख रहा होगा कि आपको क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. दैट मीन्स आई जस्ट हैव टू सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो दिस इज गोइंग टू बी माई p and this is going to be my q. Let's pick this up. So it would be e integral sine minus sine 2x upon 1 plus cos square x dx. It's a very simple question. ये आपके सेम CBSE के पेपर में बिल्कुल आसानी से आ सकता है. कैसे, बहुत ही डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा. जस्ट लेट योर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बी इक्वल्स टू टी, उठा के डिफ्रेंशिएट कर दो. सो क्या आएगा, 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. विद द हेल्प ऑफ दिस, इफ़ यू जस्ट सी क्या है ये मेरे पास, ये मेरा कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट माई सिंपली साइन 2x dx इज इक्वल्स टू डी टी. एंड इफ you will just amazed to see that over here it is exactly minus sine 2x dx, which is over here. So I can just replace this by dt. So it would be e integral dt over t. So that would be your e log of mod t. So that would be e log x is equals to x only. So it would be equals to t only. And t is your 1 plus cos square x. I got my integrating factor now. Just apply your linear differential equation. That would be I into if, that is 1 plus cos square x is equals to integral, that would be sin x 1 upon cos square x into 1 upon 1 plus cos square x. Cancel, just left with this. Now you will be amazed to see that how simple this question can be. So integral of sin x is minus cos x plus c. Now we have y0 is equals to 0. So let's put the value. Now y0. So what is cos 0? That is 1. So y into 2 is equals to minus 2 plus c, correct? Now y0 is equals to 0. So basically what is the value of y from here? I can simply say that you can just write over here as 0 is equals to c. I got the value of c as 0.
Now let's put this value. So that would be basically y 1, because cos square pi by 2. So that is 0. Okay, cos is 0 basically. So it would be basically your uh, 1, and that is equals to minus cos, that is 0, plus c. So from here I can just say that 1 is equals to your c. Okay, so I got sorry, I just have to obtain the value of c first of all. Na, I have just done one simple mistake over here. That would be okay, that would be okay. Y 0 is equal to 0, so 2 and 2 cancel out. I got my 1 is equals to c. Since my 1 was c, so y would be equals to 1, because y is equals to 1. So I got my equation as 1 for this question. Okay, I hope that the concept must be clear for this answer. If there is any doubt, please comment, because I don't know by what, because every student has their own level of understanding. I am trying my level best to explain you each and every question, but still if you're getting stuck, please let me know. Okay, so 1 would be equals to your c and 1 would be equals to your y. Yes, now such kinds of question was also there, which were looking like a little horrible one, but which was easy. And in the last video only I told you that you have to practice your definite integrals a lot more time, so that your concepts will be clear and easy and clear. Sorry, someone just entered and I just got distracted. So for this you just have to use your odd function and even functions, and then you can easily simplify it. So if you just see, whenever you see the same limits, in one is minus, one is plus, so that would be minus a fx dx. So just do one thing, that is just try to make it from 0 से a f of x plus f of minus x dx, and then you are done. If you are going to do like this and simplify it, you will see that yes, your answer is going to become much more simpler. So we just have to evaluate this. Firstly, just pick this much, so that what would be this, and just put f of x plus f of minus x, and then we're going to solve it further on. So let's take it as I1. So 0 से pi by 2, so that would be x square cos x upon 1 plus ex, that is as it is. Now x square, so minus x square is same x square cos minus x is cos x upon 1 plus e की power minus x dx. So that would be basically, I'm just going to solve it a little bit. X square cos x as it is, you are left with 1 upon 1 plus e की power x plus, now it would be 1 upon e की power x, take the LCM, so it would be e की power x upon 1 plus e की power x, take the LCM, so what you will observe, 1 plus ex, 1 plus ex, so that would be integral 0 से pi by 2 x square cos x 1 plus ex upon 1 plus ex dx. So cancel 1. So that means this is what my I1 is going to be. My I2 is going to be simply in the same manner. You just have to solve it. 1 plus sine square x upon 1 plus e की power sine x की power 2023 plus 1 plus sine square x. It is square, so basically it will also become your sine square x only. No minus sign will be there. 1 plus e की power minus sine x to 2023. यहाँ पे पावर क्या थी, एक ऑड थी, सो ऑब्वियसली माइनस साइन रहेगा. Again, exactly the same step has to be done, and you will observe that what you are going to be left with, you are simply going to be left with 0 से pi by 2 1 plus sin square x dx. हमारे पास यही बचेगा आखिरी में भी. Now just keep your eye, just add them, so it would be 2i is equals to, basically I'm just adding them now, that's why. Okay, 0 से pi by 2, and that would be your x square cos x plus 1 plus sin square x dx. देखो यहाँ पे अगर मैं लिमिट, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो नॉर्मली इट वुड बिकम x, सो पाई बाय 2 माइनस 0, सो पाई बाय 2. यहाँ पे इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, एंड इट विल बिकम पाई बाय 4. So that means you simply just have to solve this by using your integrating by parts, that is आइलेट लगाना है और सॉल्व करना है. So यहाँ पे क्या था मेरे पास, आई एम जस्ट सॉल्विंग इट ओवर हेयर. एक्स स्क्वायर, सो दिस वुड बी बेसिकली 2x, एंड देन दिस वुड बी 2, एंड देन 0 हो ही जाएगा ऑब्वियसली.
and for your cos x it would be your basically minus sin x, then for sin x it would be cos x, and then it would be again your sin x. So क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट यू कैन सिंपली अप्लाई योर आइलेट्स वैल्यू पुट करना एंड यू विल श्योरली गेट द आंसर. ये डिफिकल्ट नहीं है, ये सिंपली हो सकता है. आई एम जस्ट लिविंग इट टू यू पीपल. ओके, so you people can easily solve it and obtain the answer. I hope it must be clear. As I'm just doing this as your paper solving, so I hope कि simple calculation आपको आती होगी जो CBSE ने आपको सिखाया या जो आपको NCERT बुक्स ने सिखाया है ना. इसको मैं एक ट्रिक वाइज आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी. आई हैव शोन दिस ट्रिक इन माई शॉर्ट्स ऑल्सो एंड आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी नोन टू दिस ट्रिक. दैट इज़ अगर मुझे इसको डिक्शनरी के रैंक वाइज में अरेंज करना हो तो कैसे अरेंज कर सकते हैं. यहाँ पे रिपीटिशन भी हो रही है, तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. सो फर्स्ट कहाँ पे होगा, फर्स्ट करेक्ट, देन ABCDEFGH, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेम रहेगा बिकॉज रिपीटेशन है, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स. ओके, ये मेरे पास आ गए मेरे अल्फ़ाबेट्स. नाउ 2 से छोटे कितने नंबर यहाँ पे 1 है. टी से छोटे कितने हैं, डोंट इंक्लूड दिस 4. टी से छोटे कितने नंबर है, दैट इज़ योर 1 2. डब्ल्यू से छोटे कितने नंबर है, डब्ल्यू से छोटे आपके पास है दैट इज़ 5 से छोटा है आपके पास 1 2 3. ओके, 1 से छोटा 0 0 0 0. एंड आई थिंक यही आपके पास चीज़ें होनी चाहिए थी जो आपके पास छोटे हैं. मैंने उसको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है. अब रेपिटेशन देखते हैं. यहाँ पे रेपिटेशन कितने हैं, 2 में है. सो जस्ट राइट 2 फैक्टोरियल. यहाँ पे रेपिटेशन 2 फैक्टोरियल में है. यहाँ पे इसके बाद सिर्फ एक ही टी है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिवाइड बाय 2. ओके, नाउ जस्ट अरेंज इट एट 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल. कुछ नहीं करना है, उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो. ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे. So 6 factorial divided by 2 factorial and it's going to give you the answer as 360 plus 5 factorial, that is 120, plus 24 into 3 that is 72 and plus 0. और मुझे क्या चाहिए, मुझे जो ये ग्विंटी वर्ड है मुझे यही चाहिए, तो +1. जस्ट ऐड देम एंड +1 कर देना. The answer is going to be 553 and yes, this is your answer. A simple question. This is there in your CBSE as well and don't say that miss is not there. I know ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक मैंने ऑलरेडी अपनी शॉर्ट्स में कवर की हुई है, तो प्लीज़ वहाँ से जाकर आप देख लेना इस ट्रिक को. काफ़ी ही यूजफुल ट्रिक है एंड बिलीव मी ऐसे क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, या तो CBSE में बहुत ज़्यादा पेपर्स में आएगा ऐसे क्वेश्चन, वरना आपके 11th के अंदर और आपके JEE मेंस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं. Now the next question, it was also one of the very good questions and a good approach to be carried, and since ये simple है, it can be done in 1 minute or you can say 60 seconds. Let's read out this question. A geometric progression has 64 terms. That means जो मेरे पास geometric progression था उसमें क्या है 64 terms है, तो कैसी होगी AR square and so on up to AR 64. If sum of all the terms, इन सब का sum क्या हो जाएगा, इन सब का sum बनेगा simply R64 minus 1 upon R minus 1, because ratio is going to be simple R because AR upon R is R, is equal to 7 times sum of odd positioned term. अब odd कौन से होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म नहीं होगी, थर्ड टर्म होगी, और एंड में भी क्या आएगा, ये तो इवन है तो एंड में आएगा AR63. तो इसका भी सम देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर देते हैं. दैट इज AR64 minus 1 upon R minus 1 which is equal to 7 times. Now sum of odd positions, so that would be basically your A. Now क्या बनेगा यहाँ से मेरे पास कॉमन रेशियो, दैट वुड बी R स्क्वायर. एंड बेटा देखो टर्म्स कितनी होगी यहाँ पे, मेरे पास n कितना आएगा, बेसिकली मुझे पता है 64 टर्म्स इन टोटल, डिवाइड बाय 2 तो 32 टर्म्स. So that means 32 is going to be your even and 32 is going to be your odd. So that means terms are 32 minus 1 upon R square minus 1. Now A and A cancel. Just see one thing very carefully over here, that is R64 minus 1, this would be R2 into 32, that would be 64 only, so cancel and cancel. So what we are left with, just bring this on the numerator part, so it would be R square minus 1, so R minus 1 into R plus 1 upon R minus 1 which is equals to 7. R minus 1 cancel, so R is equals to 7 minus 1 6, and this is your common ratio and which was only required. You just have to simply find your R, that is your 6.
Yes, it can be done in 60 minutes, in 60 seconds, or in 1 minute. It was a simple question. It can be done with the flow itself. There was no new approach which has been carried over here. Now, yes, I can say that, okay, this is one of the, I would say, something between moderate and difficult. It was not easy because it's looked like a binomial theorem. And yeah, it's a little difficult question. I would suggest that. So this question you must have leave in the starting. You should have done this question once you are done with the all the questions. So it says that 11C1, 11C2, 11C9 is equals to upon whatever it is, upon n upon m, where greatest common divisor of m up comma n is equals to 1, and we just have to find the value for this. So first of all, to solve such questions, just see, as I know, it is in the sum of the form of summation. So summation r is equals to 1 to 9, 11, 11 is common over here, 11 CR upon r plus 1. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 12 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास एक चीज़ बनेगी जो तो काफ़ी सिंपल हो जाएगी मुझे सिंप्लीफाई करना. सो व्हाट वुड बी, इसे यहाँ पे जोड़ देते. सो दैट वुड बी 1/12 समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 to 9 12 CR plus 1. दैट्स वाई आई वॉज एडिंग, ताकि ये मेरे पास जो r plus 1 है वो यहाँ इंक्लूड हो जाए और ये 12 जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाए. ये आ गया. Simply let's apply this and let's apply that. Let's see that what we are going to get. So from here I will just simply simplify this, and that would be your, just keep the value. So 12C1 plus 12C2 so on. Wait, it was r plus 1 basically, sorry, when we just keep it 1, so it would be 2. So 12C2, 12C3, 12C9, so 12C10 तक मेरे पास end हो जाएगा. Always remember, we just are going to use the formula that is says that NC1, NC2 and so on up to NCN, that is equal to 2 की power n. मुझे ये वाला formula apply करना है. So for this formula I firstly need 1 and 1 also, and I need 0 also. In that it is 0 also. ना मेरे पास 0 ना 1 है. So let's add and subtract your, just write 12 over here. Just add and subtract your 12C0, 12C1 and subtract as well 12C0, 12C1. Over here यहाँ सिर्फ 10 तक खत्म हो रहा है, बट मुझे तो n और n चाहिए. So that would be just adding 12C11 plus 12C12 minus 12C11 minus 12C12. Let's simplify it. Just see one thing over here very carefully, that is that this term is going to give your answer as 2 की power 12, बिकॉज ये क्या बन रहा है, ये इस वाली फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है. सो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/12 एंड 2 की पावर 12 माइनस, नाउ 12C0 इज 1, 12C1 इज 12 माइनस 12C11 इज 12 माइनस 12C12 इज 1. जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट योर आंसर. आई थिंक ये हर कोई सिंप्लीफाई कर सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. सो इट विल बी 24 minus 2, so that is 26. So 2 की पावर 11 minus 13 upon 6. प्लीज़ इसे कैलकुलेटर में पुट करके सिंप्लीफाई कर देना, वरना 2 की पावर 11 ही तो है. सो 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 2 16, 16 to 32, 32 to 64, 64 to 128, 128 into 2. That means you just have to now do so you just multiply 128 into 16, whatever the answer is, that is going to give you 2 की power 11, and then just simplify it to obtain your final answer. It was simple, it was not complicated, but yes, it was a little lengthy, I would say. So यहाँ से मैंने answer already निकाला हुआ है, that my n upon m. I just have to see that where my answer is. Yeah, that is 2035 upon 6. That means your n is 2035, your m is 6, and just add 8 with that. That would be 2035 plus 8 plus 6. ये से calculate करना, you will get your answer easily. So yes, it's a simple question. It was not at all a complicated one. I hope so. For you people also. A very good question, a very simple question. I would not say it was difficult. It can be easily done in your 70 seconds. And this question I would say would belongs to easy to moderate. It was not difficult, okay? So now a die is rolled till 2 is obtained.
we just simply have to obtain 2, and only one die has been rolled over here. So the condition, the probability would be 1 upon 6, and for not 2 it would be basically 5 upon 6. Find the probability that 2 is obtained on even number of tosses. मतलब कि अगर मैं 1 पे देखूँ तो 1 पे तो 2 आ नहीं सकता, so not 2 into 2 प्लस, अब देखो 2 एक बार 2 नंबर पे आ गया 2 तो ठीक है, लेकिन 2 पे ना गए वो 4 पे आएगा, सो नॉट 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 इंटू 2, फिर 4 के बाद वो डायरेक्ट किस पे आ जाएगा, 6 पे जाएगा, सो 5 बार नॉट आ जाएगा। तो जब आपका 5 बार नॉट आ गया तो एक बार आपका ट्रू भी हो सकता है, एंड लाइक दिस मुझे नहीं पता कितनी और बन सकती है, सो दैट्स वाई इट इज़ गोइंग टू बी योर GP, वेयर इट इज़ गोइंग टू बी योर infinite GP. Yes, it was a question based on infinite GP only. So not 2 क्या है, 5 अपॉन 6 इंटू 1 अपॉन 6 प्लस यहाँ पे क्या है, 5 अपॉन 6 कितनी बार, 3 बार है, इंटू 1 अपॉन 6, दिस इज साइन ऑफ इंटू, ओके। यहाँ पे क्या है, 5 अपॉन 6 5 टाइम्स है, इंटू 1 अपॉन 6 एंड सो ऑन। रेशियो निकाले तो सबसे पहले हमारे पास रेशियो क्या आएगी यहाँ से, दैट वुड बी योर 5 अपॉन 6 की होल पावर 3 अपॉन 1 अपॉन 6 कैंसिल एंड 5 अपॉन 6 कैंसिल, यहाँ पे 2 बच जाएगा। सो दैट मीन्स इनफाइनाइट GP का मेरे पास क्या आंसर आएगा, दैट इज A फर्स्ट ऑफ ऑल, सो A इज 5 अपॉन 36 इंटू 1 माइनस R एंड R is 25 upon 36. Take the LCM, solve it, the answer is going to be 5 upon 11. Yes, a simple question. It can be done in 70 minutes. Even if you can just see my video, तो मैंने ये वीडियो less than 2 minutes में सॉल्व कर दी होगी, and I was explaining you people. वरना मैं ये R कैसे सॉल्व करते ये नहीं लिखती, ये कंडीशन नहीं लिखती, मैं अपनी डायरेक्ट ये चीज़ लिखती, फिर इस लाइन को लिखती और फिर मैं डायरेक्ट ओरली आंसर निकाल लेती। ओके, सो इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। Yeah, now this question is going to be based on your Leibniz theorem. I know बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि मैम हम तो भूल गए थे about Leibniz theorem. It was not that you should people forget. It was something that you should people always remember because it was the one of the most important theorem. Why Leibniz? Because we can see कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास अपर लोअर लिमिट में ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया, सो दैट्स वाई आई हैव टू यूज द लेबनीज थ्योरम. व्हाट लेबनीज थ्योरम सेज टू मी, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल fx gx and ht dt is going to be equals to your, first of all apply the limit, that is h gx into derivative of your gx minus h fx into derivative of your fx. Okay, this has to be basically done. So just apply the same concept. और फर्स्ट थिंग यहाँ पे मेरे पास 0.0 की फॉर्म में ही आएगा, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस लेबनीज थियरम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो व्हाट आई वुड गेट, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, बेसिकली ये लेफ्ट हैंड लिमिट ही मांग रहा है हमसे, एंड जैसे मैं लेबनीज इस पर अप्लाई करूँगी तो क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, लेबनीज एंड एल हॉस्पिटल ऑल्सो, बिकॉज डिनोमिनेटर को भी हमें सिंप्लीफाई करना है. सो दैट वुड बी फर्स्टली व्हेन आई अप्लाई दिस लिमिट, तो यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, सो इट विल बी cos π/2, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 0 इटसेल्फ, माइनस नाउ अप्लाई दिस लिमिट, सो दैट वुड बी cos x की पावर 3 1/3, सो 1/3 और 3 कैंसिल, सो x बचेगा यहाँ पर, और मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ f डैश x, दैट इज द लिमिट, सो दैट इज x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x². नाउ इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, सो दैट वुड बी 2x माइनस π/2, दैट्स इट. सिंप्लीफाई कर देते जल्दी से इसको, सो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस cos x इंटू 3x² अपॉन 2x माइनस π/2. ठीक है, अब सिंस मेरा x टेंड कर रहा है π/2 को, सो लेट्स टेक अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो बहुत छोटी वैल्यू है, एंड इट विल टेंड्स टू 0, सो वी कैन जस्ट राइट दैट, सो आई वॉज जस्ट टेलिंग यू पीपल दैट सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ से मेरे पास एक चीज़, सो आई कैन जस्ट से दैट x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस h. सो लेट्स सब्सटीट्यूट इट, सो दैट वुड बी लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दैट वुड बी माइनस 3/2, मैंने बाहर ले लिया, x² है तो क्या बन जाएगा, दैट वुड बी π/2 माइनस h का होल स्क्वायर cos π/2 माइनस h होल अपॉन π/2 माइनस h माइनस π/2. सो कैंसिल कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, सो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा बच्चे लोग,
from here I will be simply left with limit h tends to 0, 3 by 2, now pi by 2 minus h का square. So just put it as 0, so that would be 0, that would be your simply pi by 4 into cos pi by 2 minus h क्या होता है, that is your sin h upon h. Now limit h tends to 0, sin h upon h क्या हो जाएगा 1. So what is our answer? That is 3 pi by 8. And yes, this is going to be your answer. It was a something which I would say it was a moderate level, because I know बहुत बच्चों को लेबनीज थ्योरम याद नहीं होगी. जिसको लेबनीज थ्योरम याद होगी वो या तो भूल गया कि हमें सिर्फ डेरिवेटिव करना होता है इसमें f डैश x का, दैट इज लिमिट का डेरिवेटिव करना होता है बेसिकली. पूरे का हम लोग नहीं करते कभी भी, ठीक है. एंड डिनोमिनेटर का हमें पूरे का ही डेरिवेटिव करना था. आई होप दिस मच मस्ट बी क्लियर. इट वॉज नॉट डिफिकल्ट. येस, द कॉन्सेप्ट्स वर very much applicable, and yes, you have to be very confident while solving such kinds of question. Okay, so now a question that is fx equals to 2 की power x minus x square, where m is a number of solutions such that fx with x value. Now I would say that this kind of question is a little difficult. You will say that, okay, thank you ma'am, आपने एक क्वेश्चन को डिफिकल्ट बोला. yes, it was a little difficult. Let's work on it. It's going to involve a lot more imagination. It's going to involve a lot of your diagram knowledge so that you can get your exact answer. So first of all, fx मुझे ये given है, that is fx would be equals to 2 की power x minus x square. So first of all, let's keep it equals to 0. so यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, that is your 2 की power x is equals to x square basically. So now firstly draw करते हैं 2 की पावर x का डायग्राम. So if this is my Cartesian plane, so 2 की पावर x का डायग्राम कैसा होता है, it is always increasing like this. Yes, and x square का डायग्राम कैसा होता है, it is a parabola basically. I can simply make my parabola like this. My diagram is not exact. I know that it's very difficult to make a diagram like this. Okay, I'm just trying to draw my diagram as much as exact I can make. And let's draw the next line. Yes, it is going to be like this exactly. So now it was just asking me that m number of solutions such that fx with x axis, मुझे number of solutions डालना है, that means with the x axis, that means यहाँ पे एक point होगा, यहाँ पे एक point होगा और यहाँ पे एक point होगा. Now you will ask ma'am, how will we come to know about these points? Let's examine. 2x is equals to x square है, ये कब possible है, ये तब possible है when your 2 का square is equals to 2 square, because x और x सेम ही रहेगा ना. सो आई नो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इज इक्वल्स टू 4. सो ऑब्वियसली एक वैल्यू मेरी x की क्या होगी, 2 हो जाएगी. सो आई गॉट वन वैल्यू. आई ऑल्सो नो दैट 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 2, दैट इज 16 इज इक्वल्स टू 16. सो व्हाट आई कैन से, वन वैल्यू इज माई 4. दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास 2 होगा, यहाँ पे मेरे पास 4 होगा, और यहाँ पे मेरे पास कोई भी x की वैल्यू की नेगेटिव में. बेटा देखो, बेसिकली ये 2 बार कट कर रहा है पॉजिटिव में, ये जानना डिफिकल्ट था, बट हाँ इट वॉज वेरी ईजी कि नेगेटिव में भी ये एक बार कट करेगा ही करेगा. सो इट वॉज ईजी टू नो कि हाँ ठीक है, यहाँ पे x1 भी आएगा. सो फॉर m इट्स सिंपल टू से दैट ठीक है, माई आंसर इज 3. नाउ लेट्स मूव टू योर n, एंड n इज अ लिटल डिफिकल्ट टू सॉल्व. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. नंबर ऑफ सोल्यूशन सच दैट f डैश x विद x एक्सेस. ओके, सो पहले f डैश x निकाल लेते हैं. तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 की पावर x log 2 माइनस 2x आ जाएगा. करेक्ट. डबल डेरिवेटिव निकाल देते हैं जस्ट टू सी द कि हमारा जो फंक्शन है कैसे रिएक्ट कर रहा है, डेरिवेटिव कैसे रिएक्ट कर रहा है बेसिकली. सो दैट वुड बी योर 2 की पावर x log 2 का होल स्क्वायर माइनस 2. करेक्ट, ये आ गया मेरे पास. अब देखो बेटा, यहाँ से अपना पहले f डबल डैश x को 0 पुट कर देते हैं, एंड लेट्स सी कि मेरे पास क्या आ रहा है मेरा बेसिकली एक्सप्रेशन, या 2x की वैल्यू क्या आ रही है. सो 2x वुड बी बेसिकली इक्वल्स टू 2 अपॉन log 2 का स्क्वायर. लेट्स मेक इट एज अ स्टार. ये मेरे पास स्टार है. इट्स समहाउ अ कांस्टेंट थिंग फॉर मी. करेक्ट, इट्स समहाउ गोइंग टू बी अ कांस्टेंट थिंग फॉर मी. सो इफ आई जस्ट सी द डायग्राम फॉर सच फंक्शंस, सो फॉर माई f डैश x, सबसे पहले ये जो मेरा फंक्शन था, यहाँ पे 2 की पावर x log 2 माइनस 2x है, तो ये मेरा कैसा फंक्शन होगा, इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक अ पैराबोला ओनली. एंड जब मैंने ये डायग्राम दिया, जो मेरा एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये मेरा कितनी बार कट करेगा इस डायग्राम को,
it's going to cut it 2 times. So that means my n is going to be equals to 2. It can be positive, it can be negative. कैसे पता negative होगा positive होगा? Since f double dash x है, आपको पता है by wavy curve method, the diagram is going to move like that is पहले डिक्रीजिंग होगा और फिर ये मेरा इंक्रीजिंग बन जाएगा. सो ऑब्वियसली ये एक बार नेगेटिव पे कट करेगा इसको, एक बार पॉजिटिव पे कट करेगा. सो आई कैन सिंपली से दैट माई एन इज इक्वल्स टू 2. सो व्हाट आई कैन से फ्रॉम हेयर, that my m plus n is going to be equals to 3 plus 2 and that is 5, and this is the answer. That is 5 is going to be the answer for this question. I hope, and yes, it was a little difficult. You need a very huge graph knowledge to understand such kinds of questions, but yes, I know my students will be able to understand it. So yes, it was like this. Okay, I hope that the concept must be clear for this question. Okay, now there is one more question, and I think this is one of the last question. It was also very simple. It was an easy question. It can be easily done in somewhere 60 seconds to 70 seconds. It is not difficult. Let's understand how to do it. If modulus z plus 1 is equals to alpha z plus beta 1 plus iota and z is equals to 1 by 2 minus 2 iota, find alpha and beta. So this was the question. The value of z is also given to us. Let's obtain the value of z over here. So let's pick this one first of all, that is left hand side. So that would be modulus 1 by 2 minus 2 iota plus 1. That would be, just solve it. So it would be 3 by 2 minus 2 iota. Okay, I got this thing. And मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालने को बोल रहे हैं. So इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? That would be basically your 9/4 plus 4. Take the LCM, you will get the answer. So 16 plus 9, that is going to be your somewhere 25. So root 25/4, that is 5/2. So मेरे पास यहाँ से आ गया 5/2. मतलब कि मैं यहाँ पे मेरे पास कोई भी imaginary part है नहीं, only I have the real part. Now simplify this thing. That is your right hand limit. So that would be alpha z plus beta 1 plus iota, and that would be alpha. Now what is your z? That is 1 by 2 minus 2 iota plus beta 1 plus iota. कुछ नहीं करना है, simply compare these two things. That is real को real के साथ compare करो, imaginary है तो zero के साथ compare कर देना. So real part, that is basically equals to your 5 by 2 is equals to 1 by 2 alpha plus beta, and imaginary part is going to be equals to your 0 is equals to minus 2 alpha plus beta. So from here we can simply conclude that beta is equals to 2 alpha. I got one relation, just use this relation over here. So that would be your 5 by 2 is equals to 1 by 2 alpha plus 2 alpha. Take the LCM. So that would be your 4 plus 1, 5. So that is 5 by 2 is equals to 5 by 2 alpha. Cancel, and we got the answer, that is alpha is equals to 1. And similarly we can just say that it's just a comma, that your beta is equals to 2. We got the value of alpha and beta, and it was saying me to calculate alpha plus beta, that is 1 plus 2, which is going to be equals to your 3. And yes students, we got the answer. So now I can just sing one answer. I can just sing one song, sorry. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौन सी, तुझे मेंस पे लुटाए जा. And yes, the success is there in your path. You just have to be motivated and solve the questions like this, like I have done right now. That's it for today. Now thank you so much for supporting me. Thank you so much for your so much support that you bring in my life. I'm highly grateful that you people are supporting me so much. Thank you a lot. If there is something which is not clear in the video, because I try to explain as much as I can in a speedy solutions, but still if there is something that is not clear to you people, so you can please comment me below. I'm there to help you out. And yes, let's hope to meet you soon back in the next video of JEE Mains paper ongoing. So thank you so much class. Bye bye you all. Meet for shift 2 JEE Mains 29 Jan. Bye bye. Thank you so much.